Good morning, students. This is your lecture number 6 for the subject Power System 2. Yesterday, in lecture number 5, we had discussed regarding the derivation of positive sequence component, negative sequence component, and zero sequence component, keeping the R phase as a reference phasor. Today, in this lecture, 6th lecture, I shall continue this topic with the help of one numerical. It will give more clarity to the topic. So, what we had concluded yesterday, the following points may be noted from that conclusions carefully. The currents, the currents, positive sequence current, negative sequence current, and zero sequence current are the symmetrical components of R phase only. ठीक है, we had derived for single phase red phase as a reference phase. All the symmetrical components are calculated according to the red phase. Because of the symmetry of each set, the symmetrical components of yellow and blue phase can be easily known. Because of the symmetry of each set, the components of yellow and blue phase can be easily known. अगर हम एक फेस के components को easily find out कर सकते हैं, किया भी है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को, तो सिमिलरली हम येलो फेस और ब्लू फेस के भी हम easily find out कर सकते हैं by substituting the values. Yesterday we had concluded that कि I y2 equals to a times the r2. All the all the three phases are converted into a single phase as a reference phase. Any quantity named I y2, I b2 can be expressed in terms of the red phase. Yesterday we had concluded. So second point is saying that like we had derived for the currents, this method applies equally good to the voltages also. Zero sequence component of voltages, the formula for this will be this. Positive sequence component of voltages, the formula will be this. Negative sequence component of voltages, the formula will be this. So let us discuss one example to fully understand the concept of the symmetrical component. In the example number 1, it is saying that in a three-phase four-wire system, the currents in red, yellow, and blue lines under abnormal conditions of loading are as under. Current across red phase is 100 at an angle 30 degree. Current across Y phase is 50 at an angle 300 degree. Current across B phase is 30 at an angle 180 degree. These all the values of current are expressed in terms of polar quantities. So we have to calculate the positive, negative and zero sequence current in the R line and return line in the neutral wire. You have to calculate positive, negative and zero sequence current in single phase only, that is red phase, and you have to calculate the current in the return line in the neutral wire. Before starting this numerical, let us revise few basic concepts which we had already discussed regarding the facts about the sequence current. In a three-phase four-wire system, zero sequence current equals to 1 by 3 times the current in the neutral wire. जो zero sequence current की value होगी, that is 1 by 3 times the current in the neutral wire. A balance in a balanced three-phase system consists of only positive sequence component. एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स का बना होता है. इट डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. ठीक है, अगर नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं तो दैट सिस्टम बिकम्स अनबैलेंस सिस्टम. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ दीज नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इज unbalanced. So these are the few main conclusions which you must remember while studying this chapter. So in this numerical, let us solve. Let I0, I1, I2 be the zero
This is zero sequence component, positive sequence component, and I2 will be the negative sequence currents respectively of the line currents in the red line. So yesterday we had derived the formula for the zero sequence current 1 by 3 times the current across R phase plus current across Y phase plus current across B phase. Just substitute these values IR, IY, IB in these equations IR, IY, IB. Okay. So 100 at an angle 30 degree plus 50 at an angle 300 degree plus 30 at an angle 180 degree. Okay. So all these quantities are polar quantities. This is also polar quantity, this is also polar quantity. So how polar quantity is converted into a rectangular quantity? ठीक है, आपको अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले चेंज करना है कॉमन मोड से उसको डिग्री मोड में लाना. अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिग्री मोड ऑन नहीं है तो हमारे ये रेक्टेंगुलर क्वांटिटीज की वैल्यूज वेरी करेंगी, वो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल. सो क्योंकि यहाँ पे 100 एट एन एंगल 30 डिग्री शो किया हुआ है तो आपको अपने कैलकुलेटर्स को डिग्री मोड में लाना है सबसे पहले. फिर पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, आगे देखेंगे. फिर इनको क्या करना है, आप लोगों ने इनको रियल टर्म्स को ऐड ऑन कर देना है या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन कन्वेंशंस, एंड इमेजिनरी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड ऑन करना है. देन आपका कैलकुलेशंस करके फाइनल आंसर आएगा 27.29 एट एन एंगल 4.68 डिग्री. ठीक है. सो सिमिलरली फॉर द positive sequence component 1 by 3 times the IR plus AIY plus A square IB. So this plus this. ठीक है. तो IR है तो IY भी दिया है. IY क्या था 50 at an angle 300 degree. What is the value, how this value came? This is the value of the A operator. We had studied the significance of A operator. It shifts the vector by an angle 120 degree in the anti-clockwise direction. So we had represented this value of A equals to 1 angle 120 degree. It shifts the value of vector by an angle 120 degree in the anti-clockwise direction. Similarly, what is the value of A square? The value of A square is it shifts the vector by an angle 240 degree in the anti-clockwise direction, or we can say that negative of 120 degree in the clockwise direction. जहाँ तो वेक्टर को 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यू कैन हेयर यू कैन टेक आल्सो एज एंगल 240 डिग्री, जहाँ तो आप वेक्टर को क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट कर दो. ठीक है, बोथ आर दी सेम वैल्यूज. जहाँ तो अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज की तरह चलना है, जैसे यहाँ पे लिया 120 डिग्री, सो ए स्क्वायर यहाँ पे आप एंगल पॉजिटिव 240 डिग्री भी ले सकते हो, जब एंटी क्लॉकवाइज में जब घुमाओगे नेगेटिव 120 डिग्री भी ले सकते हो. सो यहाँ पे क्या करना है, एंगल्स को एड ऑन करो. ठीक है, और मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करो. जैसे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज 60 डिग्री. अब 300 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज 140 डिग्री. यू कैन टेक हियर इट एज 420 डिग्री, बट what they had done, they have subtracted 360 from 420 that is 60 डिग्री. आप यहाँ पे अगर 420 डिग्री भी लोगे, 300 प्लस 120 डिग्री 420 डिग्री बनता है. 420 डिग्री का आंसर भी यही रहेगा जो 60 डिग्री का है. ठीक है. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको रियल टर्म्स को ऐड ऑन करना है और इमेजिनरी टर्म्स को भी ऐड ऑन करना है. द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. ठीक है, द वैल्यू ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इज 1 by 3 times the IR plus A square IY plus AIB. ठीक है. सो 100 at an angle 30 degree plus 1 at an angle minus 120 degree plus 1 at an angle 120 degree. A square यहाँ पे जहाँ तो ले लो आप प्लस 240 डिग्री. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जहाँ आप ले लो माइनस 120 डिग्री क्लॉकवाइज, बोथ रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू. एंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 300 में से 120 गए 180. मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई 50, एंगल्स को ऐड ऑन 180 प्लस 120 300, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई 30. आपको इतना चीज याद रखना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको डिग्री मोड में
कैलकुलेटर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अगर आपका कॉमन मोड रहेगा या रेडियन मोड रहेगा, आंसर विल बी डिफरेंट। आपको डिग्री मोड ऑन करना है। So when we conclude this 1 by 351.6, the answer will be 18.96 at an angle 24.9 degree. The key point to remember is, if the value of negative sequence component is less than the positive sequence component, if the value of negative sequence component is less than the value of positive sequence component, we came to know that our sequence is right. If the value of negative sequence component is greater than, this is the negative sequence component, if the value of negative sequence component is greater than the positive sequence component, we can say that our connections will be reversed. ठीक है, the phase sequence will be reversed. RYB must be converted into RBY, or RBY must be converted into RYB. So you have to just note down the values of negative and positive sequence components. Accordingly, you can decide the phase sequence is correct or we have to reverse it. Then the last part is, what will be the value of the current in the neutral wire. ठीक है, so how I can calculate this value? Before starting the numerical, I had discussed some important points, that current in the neutral wire is 3 times the zero sequence current. ठीक है, or you can say that zero sequence current equals to 1/3 of the current in the neutral wire. अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो सीक्वेंस करंट को 27.29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 81.87 एट एन एंगल 4.7 डिग्री. एंगल विल बी सेम, दिस 4.7 डिग्री. इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड को 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल विल बी सेम. ठीक है, बिकॉज करंट इन द न्यूट्रल वायर इज 3 टाइम्स द करंट इन द जीरो सीक्वेंस करंट. So similarly, there is one homework for you people. Example number 2, numerical. The currents in a three-phase unbalanced systems are RY, RY, RB. The phase sequence they had given R by B. Just check the values of negative and positive sequence component. If negative sequence component is less than the value of positive sequence component, you can say that the sequence is right. If negative sequence component value is greater than the positive sequence component, you can say that our assumption is wrong. The phase sequence is not RYB, it is RBY. So you have to calculate the zero, positive and negative sequence component of the current. This is a homework for you. So पहले न्यूमेरिकल में क्या किया हमने, सिंगल फेस के लिए ही निकाला है. दैट सिंगल फेस इज रेड फेस ओनली. वी हैड कैलकुलेटेड the values for zero, positive and negative sequence component. Likewise, in this particular numerical number 2, in this particular numerical, we had to find out the values for R phase, Y phase and B phase. When we calculate the values for R phase, we get the solution of IR naught, IY naught. Okay, we get the solution of IR naught, IR1 and IB1. IR naught is zero sequence component, IR1 is positive sequence component, IR2 is negative sequence component. Similarly, we had discussed in the previous classes, IR naught equals to zero sequence components are same. IR naught equals to IY naught equals to IB naught. जो IR naught की वैल्यू है वो IY naught की भी रहेगी और IB naught की भी रहेगी. तो हमारा टास्क क्या रहेगा, IY1, IY2, IB1 और IB2. जब हमने सेकेंड डे के लेक्चर में हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं IB1 को इक्वल टू A टाइम्स दी IR1. हम ड्यू टू दी बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर A, we can substitute any vector, any current representing IB, IY in terms of IR1. We had already substituted and discussed in detail. So use those concepts, ठीक है, and find out the solutions. You have to calculate the currents in the red phase, yellow phase and black phase. All the three phases you have to calculate and give your answer to me.
Thank you, guys.